मैं अब नहीं आ पाऊंगी सर। ये आपको नहीं जाने बोला? में मेरे को इतना चार्ज लगता है, वो सब ये देंगी। माननीय न्यायालय से निवेदन है कि ऑर्डर में डाल दें कि आपको नहीं बोला? का चार्ज ये देंगी। और मानहानि तो मैं इनके ऊपर लगाऊंगी सर। मैंने सीनियर से बात करी है, सीनियर को भी बहुत गाली गलौज करती है हमेशा, आए दिन। फाइनल मेरा उंगली तोड़ दी थी सर। मैं इसका एक्सरे बस नहीं कराई हूँ, उसमें लिखा हुआ है FIR दर्ज कराने गई। हाँ सर, आपने कंप्लेंट किया? आपने देंगे मैं तो जाऊंगी महोदय जी, मेरी मजबूरी है, मुझे सीखना है। फैमिली कोर्ट का केस है, डेट लेके आ जाना है। बस डेट लेके आऊंगी। इतना गाली वहां दी है, वो नहीं पूछ रहे हैं, आपने कंप्लेंट किया था क्या? तो फिर इफ यू हैव एक्टेड, नहीं सर, आपने इनके माफी मांगी थी, मेरे से एज में बड़ी है। शैलेश जेकब के जो वकील साहब लगाए थे उनके जूनियर हैं आप? जूनियर हूँ सर, जयप्रकाश। तो आपने उनके शैलेश जेकब को, ये इन्होंने शैलेश जेकब ने कहा कि आपको जानते ही नहीं है? नहीं जानेंगे सर, अब मैं जूनियर हूँ, कहीं भी भेजते हैं सीनियर डेट ली और तो एविडेंस में आ जाएंगे। बताइए, माननीय न्यायालय के सामने मेरे गर्लफ्रेंड बताएगी मैं वो कहाँ जाऊँ। कोर्ट में एविडेंस दीजिए वहां पे। हाँ, उसमें पूरा वीडियो वायरल हो रहा है सर। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे मान कुछ क्षति पहुंची है, उसका क्षति पूर्ति ये देंगी। और इनके कहने में मैं यहाँ आई हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है सर। मैं स्टूडेंट हूँ, बिहार का भी एग्जाम है मेरे सामने, कोचिंग कर रही हूँ। They show that on that Khasra Pansala there is written that Bangla Ahata, and they go for that. And I have shown my honorable court that already चार्ज लगा के एविडेंस के लिए भेज देते हैं। चार्ज लगा के, यू हैव टू लीड दैट एविडेंस ना। या तो दे आर सेइंग कि यहाँ पे मकान है, ये बोल रहे हैं मकान ही नहीं है, कुछ नहीं है, ग्राउंड है वहां पे कुछ। वहां पे हम शेयर हाउस होल्ड नहीं दे सकते, नंबर 1। नंबर 2, यू सेड दैट the order says that they will not abate to their workplace, make a complaint. One challenge Jacob, who appeared probably, she has denied that. She has passed the buck on that. Then this evidence is also required to be adduced. The एक ना एक कोई तो सही बोल रहे होंगे, एक झूठ बोल रहे होंगे. If something has been stated, therefore I have, in the order sheet I have recorded, Mr. Shailesh Jacob, who is present before the court, would submit that he has not instructed any Suman Thakur to move such complaint. ठीक है? But my lord, he present for giving a statement on behalf. Prove that. That's the evidence. Unless we fix the charge, evidence दो एक महीने में करके, 1.5 महीने में करके आ जाए यहाँ पे, है ना? My lord, for चार्ज तो फ्रेम होगा। It's a criminal case. yes, my lord. And my lord, kindly give a permission to file this document. There is a RI inspection report. I have that report. In rebuttal, you file the document, Okay. and I send it for the evidence before the registered judicial. Okay. Okay, my lord. Mic, please use. On है वो? Mic on है क्या? देखो तो. My lord, at that time marriage was subsisting. अब हस्बैंड वाइफ के बहुत झगड़े, अब डाइवोर्स भी हो चुका है, और इन्होंने ऑफर भी दिया है कि हम कहीं भी इनको एक मकान, एक बेड, इसका एक 1 BHK का. He is scared of the fact who will pay the rent. रेंट देंगे सर? एक महीना देख के उसके बाद पीछे पीछे घूमो. Sir, any permanent residence, then they will give the any permanent residence then. उतना हैसियत भी होना चाहिए. Go for the. उन्होंने ऑफर किया है. Not prefer for the सर, rent. उन्होंने ऑफर किया है कि for her to consider. हम हाँ, ठीक सर, वही तो बोल रहा हूँ. think over it. सर वही तो उनका, देखिए हस्बैंड वाइफ के. अब वो एक ये है, इन्होंने वर्क प्लेस में सब कंप्लेंट मूव कर रहे थे. द ऑर्डर इज दैट कुछ कंप्लेंट मूव करेंगे नहीं, मतलब कुछ ऐसे तंग नहीं करेंगे. सर इनसे इनका कोई मतलब नहीं है कंप्लेंट से. नहीं, my lord, कोई कंप्लेंट इनका कोई कंप्लेंट we get the pay slip also from my office and file in my family court matter, in divorce matter. We are not concerned. हाँ. The fact is the prohibited from committing any act of domestic violence against the applicant or aiding or abetting any such act or entering the place of employment of the applicant for such purpose. Aiding and abetting, filing complaint in your workplace. Yes, my lord. He said, you said that it is done by Suman Thakur, yes, some advocate. Yes, my lord. Since क्या Jacob क्या नाम है? Shailesh Jacob. Challenge Jacob appeared in person before this court. He says हम जानते ही नहीं
कोई सुमन ठाकुर वगैरह So की। my lord, she. That's हाँ, why she was called. Now she is denying that हम कुछ नहीं। What is your contention? आपको क्या करना? आप इनको जानते हैं शैलेश जैकब को? मेरे सीनियर जानते हैं सर, मैं तो जूनियर हूँ, सीखने आती हूँ। जयप्रकाश शर्मा भैया के यहाँ सीख रही हूँ ना, तो एक दिन बस भेजे थे मेरे को उनका केस देखने के लिए, और उतने में ये इतना गाली, मेरा उंगली तोड़ दी थी सर। मैं इसका एक्सरे बस नहीं कराई हूँ, उसमें लिखा हुआ है FIR दर्ज कराने गई थी थाने। ये झगड़ा नहीं, अभी दूसरे पॉइंट पे है। हाँ सर, आपने कंप्लेंट किया, आपने भेजेंगे, मैं तो जाऊंगी महोदय जी, मेरी मजबूरी है, मुझे सीखना है। फैमिली कोर्ट का केस है, डेट लेके आ जाना है, बस डेट लेके आए। कितना गाली वहाँ दी है वो नहीं पूछिए पूछ रहे हैं। आपने कंप्लेंट किया था क्या? तो फिर इफ यू हैव एक्टेड, नहीं सर, आपने इनके माफी मांगी थी, मेरे से एज में बड़ी हूँ। शैलेश जैकब के जो वकील साहब लगाए थे उनके जूनियर हैं आप। जूनियर हूँ सर, जयप्रकाश तो भैया आपने वकील उनके हैं। शैलेश जैकब को, ये इन्होंने शैलेश जैकब ने कहा कि आपको जानते ही नहीं है। नहीं जानेंगे सर, अब मैं जूनियर हूँ, कहीं भी भेजते हैं सीनियर ठीक। डेट ली और तो वापस एविडेंस में आ जाएंगे। she has signed. तो पर सर इसमें जो मतलब जो कंप्लेंट का जो Some चार्ज documents have been filed by the माननीय contempt. महोदय, मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया जाए। इसमें जो 15 जनवरी को वीडियो वायरल हो रहा है सर, वो मेरे लिए बहुत, बोलते हैं ना, एकदम से दयनीय स्थिति हो गई है मेरी। मेरे पूरे 50% फैमिली मेंबर हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है। सब वीडियो देख करके इस लड़की को एक गर्लफ्रेंड बता रही है। बताइए, माननीय न्यायालय के सामने मेरी गर्लफ्रेंड बताएगी, मैं कहाँ जाऊँ? कोर्ट में एविडेंस दीजिए वहां पे। हाँ, उसमें पूरा वीडियो वायरल हो रहा है सर। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे मान को क्षति पहुंची है, उसका क्षति पूर्ति ये देंगी। और इनके कहने में मैं यहाँ आई हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है सर। मैं स्टूडेंट हूँ, बिहार का भी एग्जाम है मेरे सामने, कोचिंग कर रही हूँ, तो मेरे आने जाने का भी खर्चा ये देंगे। माननीय न्यायालय से मेरा करबद्ध निवेदन है सर। मैं गांव से आती हूँ, एकदम शैलेश जैकब किरारी मजदूरी से, and others और इन्होंने मेरे मान सम्मान को pursuant पूरा to the order जाहिर dated किया है। अधिवक्ता बनी थी मैं 15/1/25 सम्मान में लेने के लिए, अपमान करने के लिए नहीं बनी थी since the महोदय। complaint was made that the allegations were made that the certain complaints were made against the petitioner at her workplace through one advocate Suman Thakur and Shailesh Jacob, who was present before the court, was asked as to whether such inquiry, whether such instruction was being given to Suman Thakur. He denied the same. Consequently, Suman Thakur was summoned. She appeared in the person and submit that as per the instructions of his senior. Senior कौन है? क्या नाम था? जयप्रकाश शर्मा है। जयप्रकाश शर्मा। Jayaprakash Sharma. She attended the some proceeding. शायद फैमिली कोर्ट बोले वहां कुछ हुआ था सर। In family court. Family court. These prima facie, these statements are overlapping and contradictory, as Shailesh Jacob states that he has not instructed Suman Thakur. Whereas, and Suman Thakur in turn submits that she has acted on the instructions of her senior Jayaprakash Sharma. The order under contempt, since it was directed that the respondent are prohibited from causing any act of domestic violence or entering in the place of employment of the applicant for such purpose, and shall provide a place of residence in the same share household where she had earlier resided. The document filed by the respondent has been stated that no house exists where the shared household is claimed for. वो अलग है। ये जो पेश की महिला वो 68/1 जो है ना, 68/1 एविडेंस में देखते सर इतने भर हो जाए कि 68/1 it cannot be dismissed contempt. It is the prima facie that the contemnant shall also get an opportunity
to revert to file the document to revert the same. Since prima facie contempt is made out, the charge is framed as to why knowing deliberately the respondent आए, हाँ, call them. Respondent was Shailesh Jacob, Suchita Roy, and Salat Jacob, who are present before the court. अब deny the charge, yes, present before the court. क्या लिखे? Since the criminal contempt is the charge is framed Charges as to why the knowing full well the order dated 21/1/2020. The same is not complied, and harassment in the public, in the employment, the act of omission and commission has been made by entering into place of employment and causing domestic violence, as also till date has not provided the shared household. Why they should not be why the contemner should not be punished? क्या कहना है? Why you should not be punished? Yes or no? Yes, charge में क्या करना है? वो तो खैर चार्ज डिनाई करेंगे मेरे Deny. मतलब एक मेरा प्रेयर charges था are denied. सर, इनको जो ऑफर दिया गया था That is for her. It is हाँ, not तो a domain of contempt. We are only concerned with the contempt. That's all. वो उनके ऊपर है, वो एक्सेप्ट करे ना करे, हाँ. कंटेम्प्ट नहीं बनेगा, that is for the that will be finally decided. You say कोई हाउस ही नहीं है, ग्राउंड है वहां पे. हाँ, वहाँ She पे, हाँ, says हाँ. house. There is a हाँ, house. हाँ, यही. Yes, ma'am. नहीं वहां पे नहीं, हाउस अलग से You है may appear यहाँ as पे a रहते witness. थे. You may call her as a witness in the cross examination. The Suman Thakur, who is present in the court, shall also be obliged to lead evidence in the, if the case need be, on behalf of the, and she may be in the evidence. The party shall appear before the registrar judicial, wherein the evidence of the party shall be recorded. कब बताए? Immediate, ma'am. The 4th April. 4th April. मैं अब नहीं आ पाऊंगी सर, ये आपको नहीं जाने बोला. में मेरे को इतना चार्ज लगता है, वो सब ये देंगी. माननीय न्यायालय से निवेदन है कि ऑर्डर में डाल दें कि आपको नहीं बोला. का चार्ज ये देंगी, और मानहानि तो मैं इनके ऊपर लगाऊंगी सर. मैंने सीनियर से बात करी है, सीनियर को भी बहुत गाली गलौज करती है हमेशा आए दिन. Final